Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. Several celebrities including Malaika Arora's former husband Arbaz Khan and boyfriend Arjun Kapoor attended the last rites of Malaika's father Anil Mehta, who passed away at his residence on Wednesday. Arbaz arrived with his wife Shura Khan, while Kareena Kapoor was seen with Saif Ali Khan and Karishma Kapoor. The Khan family, including Sohail Khan with his son and niece, also participated in the funeral alongside other celebrities like Sophie Chaudhary. Malaika, her mother Joyce and her son Arhan were also present as well. Malaika shared a statement expressing her family's deep sadness and requesting privacy. The Mumbai police have indicated that Anil Mehta's death appears to be a suicide, but it is under investigation with the body sent for a post-mortem. बेटा बाहर हो जाओ चलो आप लोग बाहर हो जाओ चला आगे रास्ते गाड़ी पीछे देख साइड हो जाइए एक मिनट थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज आप बाहर आइए ना आप लोग प्लीज बाहर हो जाओ हाँ फोटो पीछे हट जा दादा पीछे आओ ना थोड़ा बस हो रहा है लगा दिया अभी फोन रखोगे तो पता चलेगा ना और नीचे किशन पीछे थोड़ा Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Chief Justice D.Y. Chandrachud's residence for Ganpati Puja has sparked controversy, raising concerns about judicial impartiality. Modi's participation in the festivities, including performing Aarti with the Chief Justice, has drawn criticism from political figures like Shiv Sena's Sanjay Raut and Rajya Sabha MP Priyanka Chaturvedi, who worry it might undermine public trust in the judiciary. Legal experts including Prashant Bhushan and Indira Jaisingh have also expressed concern, arguing that such close interactions could compromise the perceived independence of the judiciary. The situation highlights the need to maintain clear boundaries between political and judicial roles to preserve the integrity of the legal system. ऐसे है कि गणपति उत्सव है,
लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने मुझे लगता है अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। Mr. Modi to the residence of the Chief Justice is disturbing on 2 counts. One, that and more importantly, that the judiciary is tasked with the idea, with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens, which is primarily being assaulted by the executive. And it is also made responsible for ensuring that the executive functions within the bounds of its authority. And that is why the Code of Conduct for Judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore, this was totally inappropriate, and in my view, it's a violation. The interim government in Bangladesh has issued a directive urging Hindu communities to pause Durga Puja activities such as playing musical instruments during Azan and Namaz to maintain religious harmony. This directive aims to prevent conflicts between Hindu and Muslim practices during the festival, with puja committees agreeing to comply. This year, Bangladesh will have 32,666 Durga Puja mandaps, a slight decrease from last year's total. The government has promised extensive security measures to protect the festival and prevent disruptions. Chief Advisor Muhammad Yunus has emphasized the importance of communal harmony and warned against actions that could disturb societal pieces. The measures reflect the government's commitment to ensuring a peaceful and inclusive celebration.
The Indian cabinet has approved universal health coverage for senior citizens aged 70 and above under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or ABPMJAY announced by Prime Minister Narendra Modi. This initiative provides free health insurance coverage of up to rupees 5 lakh per year for about 6 crore senior citizens. Those already under public health schemes like CGHS or ECHS can either continue with their current plan or opt for ABPMJAY. The new measures also extend coverage to seniors with private health insurance or employee state insurance schemes. This expansion aims to enhance geriatric care and provide comprehensive health benefits regardless of income. आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इतनी विशाल स्कीम जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। ये शेयर्ड कवर का मीनिंग आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शेयर्ड मने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। शेयर्ड मने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। मान लो किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन्स है तो 5 लाख का कवरेज उन 2 सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है और समाज के जो आज के हमारे एक ट्रांजिशन हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज से कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, उसमें सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ कवरेज के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा।
A newly unveiled bronze statue of Queen Elizabeth II in Antrim Castle Gardens, Northern Ireland, has faced criticism for its portrayal. The statue, created by local artist Anto Brennan and placed next to an existing statue of Prince Philip, depicts the Queen into a skirt, boots and scarf, carrying a purse. While intended to honor her legacy, many viewers have found the statue offensive and poor likeness of the late monarch. Comments on social media have called for the statue to be removed, with critics expressing disappointment and frustration over what they view as a disrespectful tribute. The 79-year-old chairperson of the Bangladesh Nationalist Party or BNP, Khaleda Zia, was admitted to Evercare Hospital in Dhaka at 1:40 am for medical evaluation, according to sources. Her physician, Professor A.Z.M. Zahid Hossain, noted that several tests have been recommended and her treatment will be adjusted based on the results. Zia, who was recently released from 5 years of house arrest and acquitted of all charges, had previously received treatment at this hospital for 45 days. She suffers from multiple health issues including liver, cirrhosis, arthritis and heart problems. A pacemaker was installed in June and her doctors have suggested considering treatment abroad. Zia, who served as Bangladesh's Prime Minister twice, has been battling severe health complications for years. The allotment of Bajaj Housing Finance IPO's shares will be finalized today following an unprecedented demand. The rupees 6,560 crore offering saw bids exceeding 3.2 trillion, with the subscription rate reaching 674 times by the final day. The IPO, priced between 66 to 70 per share with a lot size of 214 shares, attracted 8.9 million applications, surpassing Tata Technologies' previous record. Institutional investors subscribed 222 times, while retail and other investor categories also showed strong interest. The unlisted shares are currently trading at a premium of approximately rupees 74, suggesting a significant potential gain. Bajaj Housing Finance shares are scheduled to list on the BSE and NSE on September 16, 2024. Tension erupted in Nagamangala town, Karnataka, following clashes during a Ganpati procession. The conflict began when stones were allegedly thrown from near a mosque as the procession passed by, leading to clashes between two groups. The unrest escalated with shops vandalized and vehicles set on fire. The police intervened with lathi charge to control the situation and imposed restrictive orders to the area. Protest and stone throwing continued outside the police station. SP Baladandi confirmed the situation is now under control, with adequate police presence and fire engines at the scene. Only a few minor injuries were reported and no major injuries have been noted. Procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation these people have also responded similarly, and now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. We have sent additional force. There should not be any further trouble. Few injuries, few people have been injured, but how many and how serious, all that details I'll take. Present situation is normal. Now it has come to normal, and we are investigating the case. Already registered 3 cases. One suo motu case by our police. In that we have filed a FIR under unlawful assembly section and obstruction to duty by the public servant, and other attempt to murder like that we have. The Supreme Court is set to deliver its judgment tomorrow on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's petitions regarding his arrest by the CBI in the Delhi liquor policy case. The petitions challenge the Delhi High Court's August 5 order dismissing his plea against the CBI arrest and refusal to consider his bail request. Kejriwal was arrested by the CBI on June 26, 2024, while the Enforcement Directorate custody. Although granted interim bail in the money laundering case by the Supreme Court on July 12, he remained detained due to the CBI case. Senior advocate Dr. Abhishek Manu Singhvi argued for Kejriwal's bail, citing previous bail orders. In contrast, Additional Solicitor General S.V. Raju argued that Kejriwal should first seek bail from the trial court, noting that co-accused has done so. The bench expressed dissatisfaction with Raju's comments about potential bail outcomes, emphasizing that it would not be demoralizing to grant bail.
That's all for today. Stay connected for more updates with me, Isma.